वंदे मातरम, ये जो भारत का राष्ट्रगान है, ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और आज इसी के नाम से, वंदे भारत के नाम से एक ट्रेन चलती है इंडिया में, जो कि दिल्ली से वाराणसी जाती है, जिसमें आज मैं बोर्ड करने वाला हूँ। तो ये जो ट्रेन है, इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 17 फरवरी 2019 को, बट इट वॉज फ्लैग्ड फॉर टेस्टिंग ऑन 15 फरवरी 2019 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल. So hey guys, this is Nachiket and welcome to my channel, The Tasty Humsafar. न्यू दिल्ली स्टेशन में ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से निकलती है एज 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6 बजे, और हम वाराणसी पहुँचेंगे दोपहर 2 बजे। और एज वाराणसी से निकलती है 22435 एट 3 PM और हम दिल्ली पहुँचेंगे रात को 11 बजे। सो दिस वॉज द टाइमिंग अबाउट द ट्रेन। और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे चलते हैं। चलिए, वी आर गोइंग टू प्लेटफॉर्म नंबर 16 ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि लास्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। हियर इज़ द वंदे भारत एक्सप्रेस और मेरा कोच आज है C1 और सीट नंबर है 9। तो चलिए बोर्ड करते हैं इसे। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो इसका ऑपरेटिंग स्पीड है 130 km/h एंड इट इज़ मेड अंडर द मेक इन इंडिया मिशन इन ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई। और ये ट्रेन हमें 14 AC चेयर कार है और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास चेयर कार है। AC चेयर कार की कॉस्ट है अराउंड 1750 और एग्जीक्यूटिव क्लास की कॉस्ट है अराउंड 3300। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 770 km in 8 hours एट ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 95 km/h। और इसके सिर्फ 2 हॉल्ट्स है, एक इलाहाबाद और एक कानपुर। सो बस 2 ही हॉल्ट्स है और मैं अभी ट्रेन में जाता हूँ क्योंकि इसका डोर ऑटोमेटिक होता है तो वो क्लोज हो जाएगा। चलिए ट्रेन में चलते हैं। और शार्प 6 बजे दिल्ली से निकल पड़े हैं हम और वंदे भारत एक्सप्रेस इज़ ऑन इट्स वे। सो अनदर जर्नी कमिंग फॉर यू, और इस जर्नी को पूरा देखिए क्योंकि इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। अब हम दिल्ली से निकल पड़े हैं और आते ही इन्होंने पानी बोतल दिया एक, और ये न्यूज़पेपर मिला है। तो नाइस वेलकम वंदे भारत एक्सप्रेस।
here. Tea bag. Biscuits. Digestive stream. Now we are in वंदे भारत एक्सप्रेस वॉशरूम, और इस यहाँ पे फैसिलिटीज़ देखिए कितना बड़ा वॉशरूम है। इतना बड़ा वॉशरूम आपने किसी रेलवे में देखा है क्या पहले? ये देखिए बेसिन तो लाजवाब है। देखिए ऑटोमेटिक डिटेक्शन। फिर ये है साबुन, फ्लश, जो कि ये लॉक सिस्टम है। ये पकड़ने के लिए हैंडल है। ये शेविंग पॉइंट, शेवर या ट्रिमर लगाने के लिए। सो वेरी नाइस टॉयलेट है। दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। ये देखिए ब्रेकफास्ट आज का काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है इसमें। ये ब्रेड है, फिर ये आलू पराठा है, छोले, दही, और ये लस्सी है, और नॉनवेज में ऑमलेट है और कटलेट भी है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो इनको तो कंफ्यूज हो गए ये लोग कि कौन सा कहाँ पे देना है। मुझे तो पराठा और छोले दिया है, और मेरे जो दोस्त हैं इनको नॉनवेज मंगाया था तो इनको कटलेट भी मिल गया। तो चलो ट्राई करते हैं फिर। आपने देखा 360 डिग्रीज रोटेटिंग सीट, और ये फैसिलिटी बस एग्जीक्यूटिव क्लास में है। और एग्जीक्यूटिव क्लास के और फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे 2x2 सीटिंग अरेंजमेंट है, और बाकी तो नॉर्मल है, मतलब फूड वगैरह सब वही मिलता है जो नहीं इसमें। ये सीट 360 डिग्री रोटेटिंग है वहाँ पे, तो ये स्पेशल फैसिलिटी है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में।
फर्स्ट हॉल्ट आफ्टर दिल्ली, कानपुर सेंट्रल, स्टेशन कोड CNB, और हमने 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है इन 4 आवर्स। ये स्टेशन ओपन हुआ था 1930 में, और दिस इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इन द वर्ल्ड एक्चुअली एज पर अ रिसेंट सर्वे। और दिस सिटी इज़ फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लेदर प्रोडक्ट्स, और ज़्यादा देर नीचे नहीं रुकना है, डोर्स क्लोज हो जाते हैं, ऑटोमेटिक डोर्स है। तो आपने कानपुरी चप्पल के बारे में सुना ही होगा, बहुत फेमस चप्पल होती है। और ये रहा कानपुर सेंट्रल। इट्स द सेकंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। सो जल्दी से अंदर चलते हैं कि 2 मिनट का हॉल्ट है। भाइयों 635 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करके हम पहुंच गए इलाहाबाद जंक्शन, स्टेशन कोड ALD। और ये स्टेशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ पे अभी रिसेंटली इस साल कुंभ मेला का ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट कुंभ मेला देवर ऑर्गेनाइज। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने काफ़ी मेहनत की है इस कुंभ मेले में, तो थैंक्स टू देम। और यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, 3 नदियाँ, गंगा, जमुना और सरस्वती, जो कि दिखती नहीं है, वो 3 नदियों का यहाँ संगम है। अंदर चलते हैं क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए। गाइस अभी बहुत भूख लगी है, और अभी अपना लंच आ गया है। ये देखिए, ये पनीर की सब्ज़ी है, ये है दाल, ये सूखी सब्ज़ी है, और इसके साथ इसमें चपाती है, चपाती, और ये राइस। सो दही भी है, दही भी दिया है, तो सुबह भी दिया था, अभी फिर से। तो अब खाना खाते हैं। लेट मी एंजॉय माई लंच, भूख लगी है अभी बहुत। दिस वॉज वंदे भारत एक्सप्रेस, और हमने दिल्ली से वाराणसी तक पूरा सफ़र किया। आप सोच रहे होंगे कि मैं अलग ड्रेस में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल मतलब वाराणसी में बहुत बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाया लास्ट वाला, तो मैं अभी बना रहा हूँ इसलिए। तो अगर आपको वीडियो वंदे भारत वाला पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, द टेस्टी हमसफ़र। और खाते रहिए, पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ट्रैवल करते रहिए। Thank you very much. That's it from this channel. This is Nachikesh signing off from Vande Bharat Express. Goodbye.